That's right. Our focus today on Info Corona is on rural India. Remember, this is harvest time for many vegetables. This is the Rabi crop season, harvesting of Rabi crop. But the fact is, the national curfew has meant that farmers are facing a very difficult time, trying to sell their agricultural produce in the midst of an ongoing lockdown, leading to severe financial loss. Let's take a look at how our villages are facing the coronavirus curfew. Take a look at this ground report from across the country. Fresh tomatoes dumped on the road by farmers in Karnataka's Kollar district. Another farmer from Karnataka's Chikbalapur district dumped his grape produce worth 5 lakhs in the absence of any buyers. Under current circumstances, farmers don't have a designated channel to sell their produce. And in the absence of required infrastructure and knowledge, many of them are unable to get permission to step out. With a lockdown in place and no labourers to work in their fields, farmers in Bihar's Maner town are a worried lot. Their Rabi crop that was to hit the markets in large volumes in April is severely affected by the lockdown. लॉकडाउन हो गया है, फसल इस बार तैयार है और एक भी फसल मजदूर नहीं मिल रहा है फसल काटने के लिए और हम लोग को बहुत परेशानी में है। फसल झड़ रहा है, तिलहन सब झड़ गया, गेहूं भी झड़ने के कगार पे है, एक भी थ्रेशर नहीं मिल रहा है, ना एक भी मजदूर मिल रहा है ताकि हम लोग का फसल कट सके। 4 बीघा खेती किए थे कर्ज लेके, लेकिन हम लोग का तो सब बर्बाद ही हो गया, कुछ भी नहीं बचा अभी तक। क्या चाहते हैं आप? सरकार से चाहते हैं कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर को, थ्रेशर को फ्री किया जाए, मजदूर को फ्री किया जाए ताकि वो लोग आके हम लोग का फसल को काटे। फसल पूरी तरह से तैयार है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। कर्जा उर्जा लेकर अपन खेत बधारी बोए, बोले के समय में लॉकडाउन हो गया, मजदूर आया, कुछ आया तो भाग गया। किसान के खेत में झड़ है, किसान कितना काटेगा? यार ये जगह तिलहन से लेकर गेहूं ले सब पक के देख नहीं रहे, सब पका हुआ है, सब झड़ रहा है। क्या चाहते हैं आप? अरे चाहते हैं तो जो किसान लेकर गरीब लेकर बोआ हुआ है, कर्जा उर्जा तो कुछ मिलता है सरकार और इससे तो कुछ राहत होता। Situation is just the same in Bihar's Supaul district, where farmers were all set to harvest a bumper Rabi crop when the pandemic hit. हम लोग जो है दूसरे से कर्ज लेके गेहूं लगाए हैं, गेहूं पक गया है और ये कोरोना वायरस के चलते लेबर नहीं मिल रहा है, दौनी के लिए थ्रेशर नहीं मिल रहा है, फिर उसको कैसे ले जाएंगे? हम लोग किसान हैं, खेत में गेहूं पका हुआ है, थ्रेशर घर पे खड़ा है, ट्रैक्टर खड़ा है, कोई मजदूर नहीं मिल रहा है, मतलब बैगन खेत में है, सब्जी खेत में है, कोई जा नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो रहा। हम लोग तो दोहरा मार पड़ रहे हैं। आज का बुरा हाल है। अभी तो मान लीजिए अब देश तो पूरा परेशान है कोरोना के चपेट में आकर के, लेकिन किसान का इतना बुरा हाल है जो अभी कुछ मजदूर नहीं मिल रहा है पटवन के लिए, मतलब जो जमीन सूख रहा है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग को परेशानी है, चारों तरफ से किसान को ही मतलब परेशान है। Hundreds of sacks full of potatoes, ready to be shipped and sold, but with no transporters willing to take them to the market, they are now rotting in the fields. This is the situation in Bihar's Kathiawar district. हम लोग जो है महाजन से पैसा कर्ज लेके और सरकार से पैसा कर्ज लेके जो कि अभी तक खेती किए हैं और यह कोरोना वायरस के ग्रसित होकर बहुत मार्केट में महामारी चल रहा है, जिसके वजह से हम लोग का फसल तैयार होके भी और महाजन के पास नहीं बेच पा रहे हैं और लेबर गाड़ी नहीं मिल रहा है जो कि हम लोग मार्केट मंडी तक पहुंचा सके, जिसके कारण हम लोग बहुत भूखमरी जग गया है, जिसके कारण हम लोग अभी तक यह परिस्थिति में गुजर रहे हैं। क्या करेंगे इस परिस्थिति में हम लोग ऐसा जगह रह करके भी। In Agar Malwa district of Madhya Pradesh, the fresh harvest of oranges is ready, waiting to be plucked. But non-availability of agricultural labourers has hit the farmers hard. परेशानी तो बहुत सारी है सर। परेशानी इतनी है कि मतलब जैसे भयंकर, मतलब सब बगीचे खर गए। ये माहौल जो गोलावृष्टि हुई इसमें सब नुकसान हो गया, भारी समस्या बहुत ज्यादा है काश्तकार की, बिल्कुल सब खत्म हो गए। मतलब बैंक का कर्जा अलग देना, ब्याह शादी अलग करना, मजदूर अलग नहीं मिले, लेने वाले है नहीं कोई भी, किसको दें, कहाँ जाएं, जाने का कहीं है नहीं, कहीं बाहर भी नहीं जाएं। बड़ी कठिन समस्या पड़ी काश्तकार में, बहुत मतलब बेकार हालत हो गई मतलब हमारी। The Kharif season begins in June.
But with no money in hand and their crop rotting, these farmers are now staring at an uncertain future. As I said, the focus has been on the big cities, but a lot of the crisis could build in rural India. In fact, as the country stumbled past its first week of the lockdown, the disjointed supply chain that stretches from rural to urban India is getting disrupted in several parts. As a result, food and essential supplies in some parts of the country, particularly many of the smaller states, have become a major stumbling block. It's hit the rural economy very hard. Take a look at this report. A total lockdown across India, all in a hope to contain the spread of COVID-19. But while borders remain sealed for people, trucks carrying essential commodities were also stranded across state borders, drying up supplies in cities and beyond, choking up the supply chain. As trucks piled up at borders, district administration figured out which commodities to be allowed in and which to be restricted, resulting in bottlenecks along several national highways. Several sectors in Rajasthan had been severely affected due to the restrictions imposed on vehicular movement during the lockdown. In Dholpur on National Highway 3, which used to witness a considerable amount of vehicular movement, the movement of trucks and other heavy vehicles has been significantly reduced due to the lockdown. मैं महाराष्ट्र से यूपी माल लेके जाता था, मगर मैं कई दिन से यहाँ धौलपुर खड़ा हूँ. At the Indo-Nepal border in Maharajganj district of Uttar Pradesh, many truck drivers refused to cross the border, fearing coronavirus infection. For hundreds of truckers stranded on GT Road between New Delhi and Amritsar, sourcing food for their own sustenance was the problem because roadside eateries or dhabas along the highway had all been shut. मुझे ग्वालियर जाना है सर. वापस? तो अब कब निकलोगे ग्वालियर? अब कोई बहाना ही नहीं मिल रहा है, सब चला जाने के लिए कैसे निकलेंगे? तो ट्रक यहीं खड़ा करके जाओगे? जाने के लिए भी तो कोई बहाना नहीं है ना, ट्रक भी नहीं जा रहा है इधर से, तो कोई गाड़ियाँ भी नहीं चल रही है सब. पंजाब जाना था, बोलते रास्ते में नहीं जाने दे रहे थे, अपनी गाड़ी ले चलते थे, बोलते रास्ते में पुलिस तंग कर रहे हैं, इसलिए गाड़ी नहीं निकाल रहे थे. गाड़ी निकालेंगे, पकड़ेंगे, पैसे लेंगे, फिर छोड़ेंगे. While trucks and their drivers languish outside states, the supply chain further down has also shriveled up. In cities like Lucknow, shopkeepers are expressing fear of running out of essential commodities. हमारे पास आटे की बहुत ज़्यादा किल्लत है, आटे के लिए कस्टमर वापस ही जा रहे हैं. चावल भी जो डेली यूज़ वाले हैं वो नहीं, जो हमारे पास पुराना था स्टॉक था वो सब लगभग ख़त्म हो चुका है, जिसमें रोज़मर्रा वाला जो चावल होता है वो ज़्यादा वो चीज़ नहीं है हमारे पास. Wholesale markets also see their stocks depleting. But there may be some glimmer of hope as trucks carrying supplies in parts of the country have begun to roll again, like these in Guwahati, Assam. The Home Ministry meanwhile has allowed all goods trains to move across state borders. The government also used the railway route to transport 1.25 lakh wagons with essential commodities like food, coal, petroleum in the first 5 days of shutdown. इसी तरीके से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने देश भर में लाइफ लाइन उड़ान फ्लाइट्स लॉन्च की हैं, जिनके द्वारा मेडिकल और एसेंशियल सप्लाईज जैसे टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, रीजेंट्स, मास्क और एसेंशियल कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. The worst days of administrative confusion is possibly over, and authorities all over are reviewing the situation on a daily basis. The lockdown rules are being eased as and where needed to streamline the movement of goods. The supply chain is slowly coming back on across India. But it will still take a few more days for the picture to be clearer. Restoring that supply chain remains a major challenge. Now, 2019-20 has so far been nothing but disastrous for the farmers. First, it was the unseasonal rains and hailstorm that had damaged produce in several parts. No state was more affected at that time than Maharashtra.
Now the outbreak of coronavirus and the subsequent lockdown has meant that again vehicles are off the roads, workers are off the field. Together, it's ruined any chances of the farmers' produce reaching the market. For the Maharashtra's farmers in particular, this is a double whammy. Take a look. At this time of the year, the farmers in Akola district of Maharashtra are usually busy transporting their fresh papaya produce to the market. But the year 2020 has been a disaster, one that doesn't seem to end. Unseasonal rainfall and hailstorm have destroyed this favorite fruit of many in a majority area. Papaya is a famous produce not just in the Akola district but in the entire Vidarbha region. Estimates say that the fruit is produced in almost 10,000 hectares of land in this region. And while hailstorm played the devil, it was the coronavirus outbreak that ruined whatever little hope of recovery the farmers had. दूरा मार बैठ गया हमको हमारा ऊपर से गार पीट का मौसम तकलीफ दे रहा 2 दफे गार गिर गई दूसरा जो मारा है ये कोरोना की वजह से व्यापारी हमारे खेत में आ रहे नहीं. Dayanand Patil had grown 50 tons of watermelon in his 2-acre field. To save his produce from untimely rains and hailstorm, he is shifting it to the godown. But if it won't reach the market in another 2 to 3 days, the entire produce will have to be thrown. कोरोना का जो दहशत अभी चालू है, पूरा मार्केट वगैरह पूरा बंद है, कोई लेवल नहीं है. अभी बाहर का मौसम भी खराब हो गया है, चक्रवात गोले ये पड़ना चालू है, बारिश चालू है, उसके वजह से उसको निकाल के हमने शेड में ले लिया. अगर अभी ये 2-4 दिन में अगर माल नहीं बिका तो पूरा माल खराब हो जाएगा. In Amravati, it's the same story, just that it's the orange produce that's been badly hit here. According to the farmers, almost 5% of the total produce in the entire Vidarbha region has already been lost. The oranges that fell after the storm couldn't be picked in the absence of workers. कोरोना वायरस की वजह से ना हमें मजदूर मिल रहा है, ना ही हमारा संतरा कहीं बाहर जा रहा है और इसके वजह से हम किसान सब परेशानी में हैं. The lockdown has resulted in vehicles being off the roads, adding to the woes of the farmers, while authorities say they're looking into the issue. जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेडी है फार्मर्स के खेत पर, तो उनको हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन, महसूल और पुलिस डिपार्टमेंट और परिवहन डिपार्टमेंट इकट्ठा करके जो भी फार्मर है उनका ग्राउंड लेवल से अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उनको तुरंत हम पासेस दे रहे हैं. It wasn't long ago that the prices of onion had soared to more than 200 rupees in the retail market in Maharashtra. The chances of that recurring can't be ruled out. Lockdown because of coronavirus has meant that both vehicles and workers are hard to find, and that's hit the onion producers badly. Facing acute labour crisis to pick the produce, mandi officials now want the mandi closed. But farmers are not too keen. हमारे जो पीछे जो लेबर आते हैं वो लेबर हमको नहीं मिल रहे. लेबर की वजह से हमारा लोडिंग नहीं हो पा रहा है और जो आउट ऑफ स्टेट गाड़ियाँ नहीं आ रही, उधर से गाड़ियाँ नहीं आ रही, तो इधर से जाने वाला गाड़ी 1-2 रुपया क्विंटल भाड़ा ज़्यादा मांग रही. इसके वजह से 2 रुपया 3 रुपये हमको मंडी में कम लेना पड़ता है. अपन कम लेने बाजार भाव से वो किसानों को नुकसान हो जाएगा इसमें. इसीलिए हम रुकना चाह रहे, लेकिन शासन हमको रुकना नहीं दे रहे. आजू बाजू का 31 तारीख तक मंडी ने बंद रखा है यही कारण से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है माल का. शासन को यही चाह रहा हूँ जब तक स्थिति अच्छा हो जाएगी तब हम रेगुलर मंडी चालू करेंगे. The traders too are unhappy. वायरस की वजह से जो लोडिंग सब जगह स्लो हो रहा है, उसमें अगर लेबर का उपलब्धता हो और गाड़ी टाइमिंग पे मिलते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. माल यहाँ पर सबका धीरे धीरे सब निकल जाएगा. 10 दिन अगर बंद रहेगा तो उनका रेड ओनियन के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा ही. किसान को यहाँ पर अभी जो न्यू क्रॉप है उसको रोक करके ओल्ड क्रॉप को बेच लेना, माने रेड ओनियन को बेच लेना ही उनके लिए भी अच्छा रहेगा. Red onions have a short shelf life, and if this produce won't be transported at the earliest, it will perish. Farmers who manage to bring their produce to the mandi don't find traders. This, as under current circumstances, neither export nor intrastate transfer is possible. Onion hence is being sold at 10 to 15 rupees per kg in the mandi.
मार्केट बंद हो गया तो हमारा जो फसल जो निकला है वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इसको कम से कम 4-5 दिन में बेचना पड़ता है। तो मार्केट बंद जब हो गया तो हमारा जो खेत में जो माल है, घर पे जो माल है, वो पूरा खराब हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। Meanwhile, senior NCP leader and Guardian Minister of Nashik region, Chhagan Bhujbal, is confident that things will be back to normal soon. अभी खाने की चीज़ है या दवाई की चीज़ें हैं, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। मैं डीजी से बात किया, जायसवाल से, तो जायसवाल साहब भी बोले कि भाई हाँ, मैं सबको अभी वीसी पर बोल देता हूँ कि ऐसे जो गाड़ियाँ हैं उसको अटकाव ना हो। The crisis of the farmer, something, as I said, which is falling off the corona map. One of the industries that has been affected is the milk industry and dairying. When we return, that's what we're going to look at. How has the lockdown affected the milk industry? And why are our milk producers finding life so difficult in the age of corona? Welcome back. You're watching our India Today Info Corona special, where we are focusing on what impact the corona lockdown has had on rural India. Now, the 21-day lockdown has hit several businesses across the country, but it is in rural India that many are facing even more difficult times, some say. In some states, milkmen have been seen pouring hundreds of liters of milks in ponds and drains. Why are they doing it? Find out in this report. Hundreds of liters of milk going down the drain. In many states, dairy farmers are throwing away milk in ponds and drains because they can't sell it. The milkmen of Nadia, Pulia and Burdwan in West Bengal say they are now unable to sell milk in cities as there is no transport available. ট্রেন বন্ধের জন্য আমরা না যাওয়া প্রতিদিন আমাদের প্রায় 1000 কিলো দুধ এখানে ফেলা হচ্ছে। আমাদের বিচালি বর্ধমান থেকে যে বিচালি আসে সেই বিচালি না আসার জন্য, গাড়ি না আসার জন্য আমাদের এখানে গরু বাছুরও খাওয়াতে পারছি না আমরা। The entire business has taken a massive hit and most of the suppliers are left with no buyers. To add to the woes, the sweet shops too were shut because of the lockdown. Now West Bengal produces over 3 lakh liters of milk per day, out of which around 2 lakh liters is consumed by sweet shops spread across the districts and towns of the state. Taking into account the plight of those associated with the milk business, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has now allowed sweet shops to open from noon till 4 p.m. every day, bringing some relief to dairy farmers. In Samastipur, Darbhanga and Madhubani districts of Bihar, the sale of milk has gone down by 50%. उनका दूध तो हम प्रतिदिन ले रहे हैं, लेकिन हमारा सेल और दुग्ध जन्य पदार्थ का मार्केटिंग बहुत कम हो गया है और उस अप्रत्याशित कमी के चलते रेवेन्यू संघ को बहुत कम मिल रहा है और हमें अपने किसानों के दूध का पेमेंट देना ही, हर 10 दिन पे हम उसको कैशलेस पेमेंट करते हैं समिति के द्वारा। इसमें एक बहुत बड़ा गैप हो रहा है। पहले मान लीजिए कि हमारे पास 4 लाख लीटर दूध आता था तो 2,60,000 हम मार्केटिंग कर देते थे, 1 लाख भेज देते थे झारखंड में और 15-20 हज़ार का हम प्रोडक्ट बनाते थे और कुछ रहता था उसको पाउडर में कन्वर्ट कर देते, जो बहुत माइनर अमाउंट था। अभी के डेट में क्या हो गया कि हमारा सेल घट के 1,40,000 आ गया है, प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया है। झारखंड और अलग जगह जो दूध जाता था वो भी जाना बंद हो गया है। ऐसे में हमारे यहाँ दूध की बहुतायत हो गई है और हमें उसको कमोडिटी के रूप में, पाउडर और बटर के रूप में बना के रखना पड़ रहा है। In Belgavi, Karnataka, milkmen say it is not just the lack of transportation facilities. They say the lockdown has stopped all sale. There, a dairy farmer was seen pouring 1,500 liters of milk into the river. In Maharashtra too, milk farmers complain that there are no customers. फिर अभी कोरोना आ गया पूरे देश में, हमारा दूध कोई भी नहीं लेके जाता। एक दिन दूध लेने आते हैं, 4 दिन नहीं आते हैं। फिर इस दूध को हम लोग सब गरीब लोगों में बांट देते हैं। Government milk schemes have stopped buying milk from the farmers due to the lockdown.
हर दिन 4,500 लीटर दूध आता था और वो दूध अभी 15 दिन के बाद जो अभी जो कोरोना वायरस की वजह से अभी वही दूध 8,000 तक बढ़ गया है। लेकिन हमारा जो वितरण है, जो अकोले में हम वितरण करते हैं, वो पहले जैसे है वो बढ़ा नहीं है। इसलिए जो हमारे पास दूध ज़्यादा बच रहा है वो दूध का अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि वो दूध कहाँ भेजना है। The managing director of Amul, R.S. Sodhi, admits that the lockdown has impacted the sale of milk, but was hopeful the situation will normalize eventually. Selling first 3 days increased because of panic buying. We were selling around 15% more milk in the various cities. 3-4 days, this sale increased. But after 4 days, the sales dropped by 30%. There have been 3 reasons. One is closure of hotel, restaurants, and all chai shops. Second is that people who had done the panic buying, they reduced their purchase. And third was the people migration from the urban centers to the rural centers, so that consumption. But normalization depends on how long the lockdown lasts. Until then, the scenes of milk going down the drain may well continue. Bureau Report, India Today. That's all that we have for the time being on the show. Remember, the only way to beat this pandemic is to stay indoors and stay safe. And while you stay safe, think about the Kisan who's having a tough time in the harvesting season. That's it on Info Corona. On the other side, Rahul Kawal will be joining you with all the very latest on the news track. Stay tuned. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.